Hello friends, in this video we are going to discuss about the use of microbes as a biofertilizers. You are knowing that in modern society we are using mostly chemical fertilizers, but we have already discussed what are the effects of the chemical fertilizers. They are going to be harmful, certain are toxic also, and that also reduces the fertility of the soil. So that is not a good idea to use chemical fertilizers. So over here we are going to talk about the biofertilizers. Let us see what are biofertilizers. Biofertilizers are the organisms. They are organisms that enrich mainly two nutrients, right? It is going to enrich mainly two things. ये दो चीजों को enrich करेंगे. Enrich that organisms that enrich nitrogen and phosphorus in soil, right? So over here nitrogen and phosphorus is enriched by such organisms, right? So which organisms can enrich the nitrogen and phosphorus? So over here there can be three. First one is bacteria, right? We are going to talk about this. Second is fungi, right? And the third one is cyanobacteria, right? The third one is cyanobacteria. So basically there are three types of organisms. Okay, let us see the first one, bacteria. Okay, bacteria can add definitely nitrogen into the soil. So we are taking some examples of this. Which bacteria, right? First one in this, that is rhizobium bacteria. Rhizobium bacteria is having symbiotic association with the plant. कैसा एसोसिएशन होता है उसका? Symbiotic, right? So both are equally getting benefited. So rhizobium bacteria having symbiotic association with plant. Okay, symbiotic association with plant. What is the function of this rhizobium bacteria? क्या करता है rhizobium bacteria? ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है. Rhizobium bacteria fixes atmospheric nitrogen. Fixes atmospheric nitrogen to organic form, right? To organic form, and this organic form can be used as nutrient by plant, right? So organic form is used as nutrient by plant. So this is the first example of the bacteria, right? समझ में आ रहा है? राइजोबियम बैक्टीरिया सिम्बायोटिक एसोसिएशन रहता है. आपने सुना होगा राइजोबियम बैक्टीरिया आर हैविंग सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद सर्टेन लेग्यूमिनस प्लांट, राइट? इन दैट राइजोबियम बैक्टीरिया रियूज इन द रूट, राइट? रूट नोड्यूल्स बना के, रूट नोड्यूल्स जो होता है वहां पर वो पाए जाते हैं. एंड दैट फिक्सेस द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. अभी नाइट्रोजन जब फिक्स होता है तो वो कौन से फॉर्म में होता है? ऑर्गेनिक फॉर्म. और वो न्यूट्रिएंट के फॉर्म में प्लांट उसको यूज करता है. दैट इज द मेन बेनिफिट ऑफ दिस बैक्टीरिया, राइट? सेकेंड, इट इज नॉट हार्मफुल, इट इज symbiotic. Now taking the second example of the bacteria is, we are just talking about first bacteria, then we will discuss also about the fungi, right? So in case of bacteria, second one is Azotobacter
right, and azospirillum. These are two. Azospirillum, right? So basically these two are free living bacteria, right? We are not talking, we are just talking about the bacteria. So let me rub over here so you don't get confused, right? We are taking first as bacteria. कौन कौन से तीन थे? बैक्टीरिया, then second fungi, and third one was cyanobacteria, right? You have to remember this. So we will discuss one by one. Azotobacter and azospirillum are free living bacteria, free living in soil, right? What is the function of these two? They also fix atmospheric nitrogen, right? Atmospheric nitrogen so into soil, यानी कि that increases nitrogen content in soil, increases nitrogen content in soil. Okay, so this is just freely found in the soil, and it is also fixing the atmospheric nitrogen. So this you have to remember, rhizobium bacteria is having symbiotic association, while azotobacter and azospirillum are free living in the soil, and it fixes atmospheric nitrogen into the soil so that it increases the nitrogen content. So basically this was about the bacteria. Now there is the second one is fungi. Let me clean this board and we will again start the topic with fungi. One is fungi. Some of the fungi, right? यहाँ पर हम सेकंड डिस्कस कर रहे हैं, ऑलरेडी हमने फर्स्ट डिस्कस कर दिया है. फंगाई के बारे में अगर हम बात करें, राइट, सो इन केस ऑफ फंगाई, फंगाई इज हैविंग symbiotic association with certain plants, right? Certain fungi species are having symbiotic association with the plants. Okay, symbiotic association with plants. This symbiotic association is referred as mycorrhiza, right? It is referred as mycorrhiza. ओके, ज्यादातर जो माइक्रोराइजा बनाते हैं, राइट, उसमें से जो फंगस स्पीसीज का जो जीनस रहता है वो होता है ग्लोमस. मोस्ट ऑफ द फंगाई आर ऑफ जीनस ग्लोमस दैट फॉर्म्स माइकोराइजा. याद रखिएगा, ये ग्लोमस इज द जीनस विच इज फॉर्मिंग माइकोराइजा. नाउ what is the benefit of this association? Let us see. Fungi absorbs phosphorus from the soil. Fungi क्या लेता है soil में से? Absorbs phosphorus from soil. Okay, and वहां से कहां पर जाएगा? It is delivered to the plants, right? Fungi absorb phosphorus which is associated, that fungi which has absorbed the phosphorus is associated with the plant, so it will be given to the plant, right? याद रखिएगा, fungi absorbs phosphorus and it delivers to the plant. In return, plant क्या देता है fungi को? वो होता है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड. यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मिस्टेक्स होती है बच्चों की, कि अगर what is the एब्जॉर्ब पार्ट बाय फंगाई, तो बच्चे क्या गलती कर देते हैं, ज़्यादातर वहाँ पर वो नाइट्रोजन कंटेंट, पर ऐसा नहीं है. फंगाई क्या एब्जॉर्ब करता है? फॉस्फोरस, और रिटर्न में क्या मिलता है उसको? नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड. ये आपको याद रखना है. नाउ सर्टेन अदर बेनिफिट्स आर ऑल्सो एसोसिएटेड विद दिस एसोसिएशन, राइट. एक क्या होगा इससे?
बेनिफिट, राइट। दूसरा एक, ये तो फॉस्फोरस तो मिल गया प्लांट को। द नेक्स्ट वन इज प्लांट गेट रेजिस्टेंस फ्रॉम रूट बॉर्न पैथोजेंस, रूट बॉर्न पैथोजेंस, राइट। क्यों? क्योंकि उसके साथ क्या एसोसिएटेड है, फंगाई एसोसिएटेड है, इसलिए उसको उसमें भी रेजिस्टेंस मिलता है। ऑल्सो टॉलरेंस टू ड्रॉट एंड सैलिनिटी, राइट, ओके। So in case of a plant which is growing in saline area will also be tolerating that the condition which is over there, जहाँ पर ज़्यादा सैलिनिटी पाई जाती है वहाँ पर भी ये प्लांट ग्रो कर सकेगा, एक बेनिफिट है। इसकी वजह से इंक्रीजेस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ plant, development of plant. So this is all about the fungus, right? So now the last one is cyanobacteria, and then we will see the advantages of this entire biofertilizers, right? So let me clean this and then we are starting again. Now the last one is cyanobacteria. So over here the third one is cyanobacteria. What is the role of cyanobacteria? Cyanobacteria fixes the atmospheric nitrogen, right, okay, and these are, first one, let me write over here, nostoc, Anabaena and Oscillatoria. So these are certain cyanobacteria which fixes atmospheric नाइट्रोजन। एक तो ये हो गया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स करते हैं जिससे कि सॉइल के अंदर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का जो फिक्सेशन हुआ इसकी वजह से नाइट्रोजन कंटेंट बढ़ता है, राइट। सो इट फिक्सेस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। नेक्स्ट वन इज about the another thing, it also adds organic matter into soil. So nitrogen content also increases, with it organic matter also increases, and this leads to increase in fertility of soil. इससे क्या होगा, फर्टिलिटी भी बढ़ेगी सॉइल की, राइट। सो दिस इज द थ्री थिंग्स इन पैडी फील्ड्स। Right, this cyanobacteria or blue green algae, BGA, that is blue green algae, serve as an important biofertilizer. Okay, so this is about the cyanobacteria. Now talking about the advantages of biofertilizers, right? First advantage, it is low cost input. There is no much cost in increasing the number of the organisms, right? Second, it causes no pollution, right? इससे pollution नहीं होता है। तीसरा, right, it also replenishes the nutrients, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस का भरपाई कर देता है, जो सॉइल में से प्लांट में चले गए उसको रिप्लेस करता है। तो इट रिप्लेनिश न्यूट्रिएंट्स, ओके। एंड द नेक्स्ट वन इज इट ऑल्सो रिड्यूसेस द डिपेंडेंस ऑफ केमिकल्स, राइट, ओके। फोर्थ,
reduces dependence of on chemicals, right? And the last one is about the it helps in organic farming, helps in organic farming. So this is all about the bio fertilizer, and that is also the completion of entire chapter. Thank you.